नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। नाउ वी आर रेडी फॉर द डे 6 पीपीडीटी चैलेंज। आई थिंक कल एक पिक्चर आया नहीं था तो उसका एक रीजन भी था, क्योंकि एक तो थोड़े से कम स्टोरी आए थे तो आई फाउंड आई थिंक पीपल नॉट इंटरेस्टेड एंड ऑल, बट आई गॉट लॉट्स ऑफ कमेंट की कंटिन्यू कीजिए एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ कॉल। सो आई एम गोइंग अहेड विद दिस। आई थिंक नाउ वी शुड सी। बट बेस्ट पार्ट आज का क्या है कि काफी बच्चों ने दो दो स्टोरी लिखा है। दैट इज व्हाट वी वांटेड, क्योंकि जब आप दो स्टोरी लिखते हो कि थीम पे, दैट इज द आइडियल वे टू गो अहेड एंड ये आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, इसको हेल्प करेगा। इनफैक्ट जब एक्चुअल में प्रैक्टिस कराते हैं तो वी लेट पीपल थिंक अबाउट 5 6 इनफैक्ट समटाइम 10 आइडियाज आल्सो, कि मिनिमम दो आपको सोचना है एंड दैट इज वन वे हाउ वी शुड गो अहेड अबाउट इट। सो इफ यू लुक एट द पिक्चर, आई थिंक इट इज वेरी क्लियरली शोन। एक पूरा माउंटेन टाइप है, एक बंदा ये ऊपर है, तीन बंदे नीचे बात कर रहे हैं, समबडी इज ऑन द टॉप एंड गोइंग अप। ये तो ट्रैकिंग पे हो सकता है ना, किसी स्पोर्ट्स पे हो सकता है विच इज रिलेवेंट टू द हिमालयाज और इन काइंड ऑफ ए हिल स्टेशन और माउंटेन से रिलेटेड जो कोई स्पोर्ट्स होता है उससे होता है। बट ये काफी पहाड़ी एरिया है। यू कैन लुक एट देयर क्लोथ्स आल्सो सीम्स लाइक स्लाइटली स्नो वगैरह भी हो सकता है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा स्कोर देखोगे तो। ठीक है, तो इस पे है, लेट्स सी कि हाउ द स्टोरी हैज कम एंड टुडे आई एम गोइंग टू रीड मोस्ट ऑफ दोज स्टोरी व्हिच आर टू थीम्स एंड ऑल, बिकॉज़ उससे पता लगेगा आपका लेवल क्या है। Look on to this and we'll go ahead with this. So if we see this, there is only one story and here there are two stories. Let me see that. So we do have story one, story two. It's a good way of starting. First theme is being a responsible leader. Aman, Surya, Vinith and Vishal were four college friends of age 21 who had gone for a hiking trip in the Himalayas. I'll tell you one more thing. Generally जहाँ पे चार लोग हैं, आप हीरो को अलग से responsible form में दिखाना चाहते हो and you want to focus more onto him, better to write this. Aman along with his friends had gone for a hiking trip in the Himalayas. चेंज ज्यादा कुछ नहीं है, बट होता क्या है कि when you take a name and बाकी reference as his friend, basically he is the main in terms of taking responsibility what has he done and all. When you write more names, it doesn't comes out that way कि you are taking responsibility, you may be sharing some part of a responsibility. यहाँ पे आप पूरा responsibility लेते हो, that way you could have done, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज्यादा बेटर हो सकता है। They were climbing a peak when it started to get dark and started snowing mildly. They decided to camp for the night and continue their journey the next day. But their present place was very rocky and not suitable for setting up their camp. अभी यहाँ तक सब दे चल रहा है, मतलब सब लोगों का काम चल रहा है, तो अलग से ऐसे नहीं है कि अमन अलग से सेपरेट हीरो है या सूर्या मे बी नाउ आ सकता है। अमन went around to find a good spot to pitch up their tent while the rest sat and relaxed for some time as they were tired. Soon Aman came back and said there was a suitable location a few hundred feet away. All four of them set their camps there for the night and finished their trekking the next day. I will say stories good, लेकिन इसमें जो पार्ट है ना, एक्शन जो है, दे आर मिसिंग। मतलब आपको जगह नहीं मिल रही है, वो जाके गया, उसने बोला जगह मिल गई, आ जाओ। We are looking something more than this in a situation. It could have been more specific. What kind of a location they were looking, how he helped them and all. So ये थोड़ा जो last का part है, if you do this, but I think I remember this name because of this I think cat. So this story is very regular and lots of changes. You surely go ahead with such a story, but require more of a discussion in terms of a narration well, GD well, वो है और better हो सकता है। लेकिन let me see the second story from the same case. सेम प्रॉब्लम, रेस्क्यू क्लाइंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ तक ये चार ऑल अराउंड 20 or 30 इंडियन पैरामिलिट्री पर्सन स्टेशन इन द हिमालयाज। वंस व्हाइल ऑन ड्यूटी दे रिसीव्ड ए कॉल। फाइनली भी हो सकता है कि राजेश एसएसए वहाँ पे पोस्टेड एंड ही on his duty received a call. Then he along with his friend has gone to find out. Finally you require team, you require collaboration, everything we want to see. But हर चीज में दे मतलब आप तो किससे हो, मतलब पूरी तरह से यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी रहता है। Last in around, okay, they received once while on duty they received a call that one tracker was missing in the mountain and was last seen around peak 5677. Immediately the squad rushed to the last known location. From that point there were three climbing routes and the squad wasn't sure where the tracker had gone. Rajesh first went along route 1 to search for the person, and Amit and Koshal gathered their equipment and went along route 2, and Vicky went along route 3. Soon the tracker was found by Rajesh.
He had been very scared and confused as he had got lost from the rest of his team and it was almost getting dark and there was no connectivity. He was very happy to get rescued and was reunited with his team. Tracker team was also very happy and thanked the paramilitary squad for their efforts and promised to be more careful from then on. बाकी सब ठीक, लेकिन सिर्फ जाके गए और जैसे आपके दोनों स्टोरी में एक ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप वो गया, उसने कहा एक अच्छा जगह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे गया, रास्ता उसको मिल गया, वापस आ गया। प्लानिंग पार्ट, बट एक्शन एक्चुअली टेक वन यू आर ऑन द ग्राउंड, तो वो चेंज करना है। एक जो मैंने बताया था दे की जगह लाइक ही अलॉन्ग विद फ्रेंड एंड ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अगर ऐड कर दोगे तो श्योरली गो हैड एंड वेरी गुड चेंज इन द स्टोरी। ओके, now again there's a one more story one more candidate is written two story. Sumit, नाम भी सिमिक का, अपने हीरो भी अपना सिमिक पे बना लिया। ट्राई टू portray someone else. Simic 24 was a professional mountain climber and mountain climbing was his passion. He already climbed Kanchenjunga range K2, one of the highest peak in the world, and now he was preparing to climb Nanda Devi Hill, which has cold and frosty atmosphere, making it hard to climb. But Simic was very confident due to his skills and experience. He was wearing a thick jacket made of fur to keep him warm, and plan was to start his journey in the morning so that he could get enough time to climb in daylight. Actually, when you try to climb a mountain, you don't do it just one day. आप गए सुबह से जल्दी जल्दी निकले और यहाँ से वहाँ कर दिए. You set up a base camp. You know mark it कि आज यहाँ से इतना करना है, फिर ये करना है. So all this planning comes generally. And जैसे उन्होंने कि thick jacket पहन लिया तो आप फर वाला change हो गया. जैसे something different kind of a clothing you require for mountaineering when you go in such a high altitude or in a snow or maybe इससे एक fur jacket से नहीं काम चलेगा. Different kind of a boots, clothing all over, which could have been a part of it. He had a map of the Nanda Devi hill in which he had marked checkpoints where he could take some rest and divide his journey into parts. He had packed some essential items like food, water, a satellite phone in case of any emergency, a long rope, some hooks, and kept these in his backpack and started his journey without any delay. Simic had covered some distance. Three other mountains saw him and appreciated him for his courage to climb the mountain in this freezing weather. Simic kept on climbing. His plan was successful and he reached the zenith point before dawn. And what do you mean by zenith point? It's a very different meaning altogether. Understand what the zenith is. He was very happy and then thanked Nanda Devi for the successful completion of his journey. तो इसमें आपने बाकी क्लाइंबर ने सिर्फ देखा, गॉट मोटिवेटेड. प्लानिंग थोड़ा सा हो सकता है, मतलब ये बहुत ही रियलिस्टिक नहीं लग रही है. स्टोरी ठीक है, थीम भी सही है, उसी जगह पे गया है, स्लाइटली मोर रियलिस्टिक कुड हैव बीन, वो आप इसमें एक्शन देख सकते थे. Simic again was a secret agent in the Indian Army and was posted near the Kanchenjunga range. He got information from his commanding officer that some Pakistani militant has captured this range. His task was to get more information about the militants. He prepared his backpack and carried some items like rope, hooks, and radio for communication. He opened a map of the mountain and decided to climb from the east side of the mountain, which had a very steep slope and many rocks where the militant could not see him climbing. On his way, three villagers saw him and thought of him to be a mountaineer. Simic has reached the location from where he could analyze the situation more clearly. He saw that the militants were loaded with ammunition missiles. He noted their exact location and contacted his commanding officer. The next year, soldiers of the army, the help of Simic, attacked the militant, and Simic was appreciated for giving precise information about the militant. I'll say comparing both the things, first one is slightly better, not the second one. यहाँ पे आप unnecessary एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जो लग नहीं रहा है. इवन इफ यू गो अहेड विद, मुझे थीम्स दोनों का ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है प्लानिंग, प्रॉब्लम है उसका एग्जीक्यूशन. पहले मतलब ऐसे नहीं कि आप पूरा माउंटेन अकेले क्लाइंब कर रहा, तो आपने पहली में भी किया, दूसरे में भी किया, एक ही बंदा है, सब उसका प्लानिंग है, सब वही कर रहा है, ये कर रहा है. सी ही समबडी व्हेन आई सेड सो मेनी नेम्स, इससे पहले जब बोल भी रहा था कि आप ही करके लिख सकते हो, इट मींस ही अलोंग विद हिज फ्रेंड, योर कोलैबोरेशन, एंड स्पेशली दीज काइंड ऑफ एन, चाहे वो एडवेंचर एक्टिविटीज हो, चाहे वो ट्रैकिंग का हो या कोई मिशन हो, यू रिक्वायर different kind of a team collaboration. You don't do it like this कि अकेला बंदा जा रहा है, वही नेल ठोक रहा है, वही ऊपर चढ़ रहा है, वही नीचे आ रहा है. How can you gonna do this? It required a group efforts and also वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. तो ये थोड़ा अगर आप डालोगे तो स्टोरी Simic will look be more realistic, can be accepted. As of now, slightly acceptance of the story is not feasible. ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करना है. Okay, sir, please review. Okay, we'll surely review. But
यू शुड राइट टू स्टोरी। आई कुड हैव बीन मोर हैप्पी एंड कि भी मैं शायद इसको अच्छे से रिव्यू करता, लेकिन आपने सिर्फ एक ही लिखा। मैंने बोला भी था आपको कि एटलीस्ट यू हैव टू राइट टू डिफरेंट थीम पे दो स्टोरी लिखोगे। Ajay was a young man, came to know about a mountaineering camp and he had a lot of interest in it. He asked his friends about it and permission of their parents. They then contacted the Mountaineering Institute conducting the camp and asked doubts and got required information about high altitude places. The book ticket and carried, maybe you want to write, they booked the tickets and carried basic necessities and snacks as per their convenience, planned trip properly, and on reaching at the institute, they acclimatized themselves, learn basic skills and practice them. Then with the group and other friends they met, their enthusiastically had joyful moment together while mountaineering. They made good memories and captured moments in videos and snaps. Every one of them enjoyed a relaxing trip to mountains. दो चीजें थीम वाइज ठीक है, एक्शन भी काफी डाले हैं बट कुड हैव बीन एलोबरेटेड। उस पर और क्या हो सकता है, आपने इसको मोर ऑफ फन जैसा दिखाया है और आप लिख रहे हो हाई एल्टीट्यूड, तो एक तो वो प्लानिंग वाला थोड़ा पार्ट मिसिंग। सेकंड थिंग इज, सी पिक्चर में बहुत क्लियरली दिख रहा है 3 बंदे नीचे खड़े हैं, एक काफी ऊपर जा रहे हैं, ये कुछ रिलेवेंट आना चाहिए। हाउ यू डू गो बैक, तो पहले वाले ने काफी अच्छे से उस चीज को डिस्क्राइब किया था, मे बी वन इज गोइंग टू डिफरेंट रूट्स टू सर्च। और तो ये थोड़ा सा प्लानिंग, हैव टू वर्क मोर, हाउ ही स्लाइटली अहेड एंड मोटिवेट समथिंग और गोइंग डूइंग समथिंग, तो ये चीज है। बाकी थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा रिफाइन करना है। अदरवाइज आई थिंक आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम इज इंडियन डिटेलर शो, सो आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम अच्छा, लेकिन like only Ajay because the hero is Ajay. So Ajay, if you could have elaborated slightly, this could have been a good story. क्योंकि आपके एक्शंस हैं लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छे से करके लिखना है और लैंग्वेज का थोड़ा आप ध्यान रखो, वो कर सकते हो। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो जॉयफुल ट्रिप नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, दैट स्टोरी इज एक्सेप्टेबल। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग इट हैज टू बी एक्चुअली रिलेवेंट टू दिस। अब एक आपने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस। सो अब आप वहाँ 4 स्नैक्स में चले गए, एक्मेटाइज हो गया, बस ऐसे करके देन यू हैव टू बी, स्टोरी शुड बी टू दैट लेवल जो आपने लेवल इनिशियल उसमें सेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। देन अगेन आई एम लुकिंग मोर ऑफ अ टू स्टोरी बिकॉज दैट इज जहाँ पे बच्चे की एक्चुअल में, हाँ ये क्रिएटिविटी पता लगी। आदित्य तिवारी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सब में उतने सेम रहेगा। लीडिंग द माउंटेन क्लाइंबिंग टास्क है, दूसरा हेल्पिंग क्लाइंबिंग है। प्रियम वॉज ए माउंटेन क्लाइंबर, हिज पैशन टू माउंटेनियरिंग, हाँ देखो यहाँ एम कैपिटल लिखा है, एच का हिज वो फुल स्टॉप के बाद है वो स्मॉल है, नाम भी स्मॉल है। ये थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है when you write it up। यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग क्योंकि कई बार वो आई थिंक ऑटो भी हो जाते हैं ऑटो करेक्शन में। प्रियम वॉज ए माउंटेन क्लाइंबर, पैशन टू माउंटेनियरिंग लिख दिया। leads him to be an instructor in Himalayan mountain authority. Darling, maybe you want to write Darjeeling. Once he was giving an opportunity to lead a group for climbing Naga Parvat. First, he discussed his teammates, told them about simple precautions, gave him required things like rope, maps, compass, suits, first aid box, etc. Then he started journey there. He motivated his teammates whenever they felt lazy instead of some bad weather condition. They completed their journey and returned. Priyam admired all his teammates and also congratulated them. It's a good story. Would have been slightly well written. देखो आप लैंग्वेज को एलोबरेट कर, फाइनली आप जब तक वो सही से एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, वो चीज नहीं आ रही निकल के। तो वो आपको देखना है। अगेन आई से गुड स्टोरी, क्योंकि आपको जो चाहिए थीम अच्छा है, स्टोरी लिखने का थोड़ा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे एक्शन डिटेल में आप जो करो एग्जैक्टली लिखो, उसने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये किया, देन इट एंडेड, इट कुड हैव बीन मच बेटर, बट आई स्टिल आई विल गो अहेड विद दिस स्टोरी। दूसरे में आप लिखते हो निखिल वाज ए माउंटेन क्लाइंबर, ही वाज पार्ट ऑफ उत्तरकाशी माउंटेन क्लाइंबर्स अथॉरिटी। Once he and his colleagues decided to climb on Nanda Devi, they gathered all required things like ropes नहीं होगा, rope होगा, ropes, maps, compass, food, etc. They started their journey. When they was discussing in journey time, they saw a climbing only slip from about 50-meter high. They immediately went there, gave him first aid and take care of him till he got well. Then they all four started their journey and completed and returned safely. Not a good story at all. Helping a climber मतलब आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को प्रॉब्लम में डाल के वो 50 फीट से उसको गिरा दो, देन यू डू इट, और जबकि पिक्चर में ऐसा दिख नहीं रहा है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दिस इज समथिंग कॉल्ड पुटिंग समवन एल्स इनटू प्रॉब्लम टू बिकम हीरो। ये थोड़ा आपको अवॉइड करना। कि नॉर्मल लाइफ में भी हम बोलते हैं ना, हमें ऐसे नहीं होता कि दोस्त को बोलेंगे कि भाई तू छत से गिर जा और तेरा हाथ पैर टूटेगा, फिर मैं दिखाऊंगा मैं तेरा कितना अच्छा दोस्त हूँ, तब मैं तेरी पूरी सेवा करूंगा, ऐसे नहीं हो सकता।
अच्छा फ्रेंड बनने के लिए आपको अपने दोस्त को छत से गिराने की जरूरत नहीं है. सो टू बिकम ए हेल्पिंग हैंड और टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ थीम. थीम अच्छा है, आइडिया बढ़िया है, लेकिन डू नॉट पुट समवन इन सच ए बिग ट्रबल एंड टू बिकम सो दैट यू कैन शो योरसेल्फ एज ए हीरो. वो थोड़ा अवॉइड करना. जिन्हें कॉलेज ट्रैकिंग पे बनाया है, जिन्हें टीम वर्क पे बनाया है. Then again I'm looking for two stories. Let me see how does I found. कम ही मिल रहा है. लेट मी राइट ऑफ दिस साइंटिफिक रिसर्च ऑन ग्लेशियर. स्टेज सिंह लिखते हैं, राम 28 was a scientist in the meteorological department. He was worried about continuous activity of climate change. Took some steps as a scientist and decided to research on glacier. Took help from his batchmates and told them about his plans. He made a team and went for nearest glacier in Himalaya. While climbing, यहाँ पे आप एग्जैक्टली लिख सकते हो कि अब वो किस ग्लेशियर पे गया, किसके लिए वो, क्योंकि आप ना जितना रियलिस्टिक प्लान दोगे ना कि मुझे वो यहाँ पर पोस्टेड है, उस ग्लेशियर का मेल्टिंग को देखते हुए वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का नाम अगर आप दोगे तो वो और रिलेवेंट आएगा. By climbing a half of mountain range, they are facing a problem of oxygen, other food problem. Ram told his batchmate that he alone went to mountain, other wait here. Maybe he said he will. Ram completed his research and submitted to meteorological department. Ram was happy with it. Again, I'll say not a good story. And why it is not a good story? आपका जो एक्चुअल स्टोरी है ना, वो लास्ट लाइन है. राम कंप्लीटेड हिज रिसर्च एंड सबमिटेड टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इतने लाइन में आपको टोटल एक्शन लिखे हैं. डू यू थिंक इट इज अ गुड स्टोरी? अरे आप करना क्या चाह रहे हो बच्चा? आप जब तक जो चीज आप करने के लिए प्लान करो, प्लानिंग वो एक्शन एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. अगेन आई रिपीट द थ्री मेजर थिंग विच यू टू लुक फॉर इट. व्हाट लेड टू द सिचुएशन, वो इसमें सही है. वे ग्लेशियर में वो मेल्ट के लिए वहां जाते हैं. व्हाट इज हैपनिंग नाउ, वो एक लाइन में खत्म. व्हाट इज द आउटकम? आउटकम आपने लिखा राम वाज हैप्पी विद यू. इनफैक्ट कंप्लीट रिसर्च है मेन एक्शन इन सबमिटेड टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. आउटकम क्या? ही वाज हैप्पी विद यू. दैट इज नॉट वेरी. ट्राई टू बी मोर एलोबरेट. इनफैक्ट दिस द बिगेस्ट पार्ट व्हाट इज हैपनिंग नाउ. जो आप एक्शन कर रहे हो वो ज्यादा मुझे सबसे बड़ा होना चाहिए. उससे पहले एक या दो लाइन में आप लिखिए कि ऐसा क्या हुआ कि वो उस पर जा रहा है. अगेन दिस सिनेरियो, व्हाट हैपेंड एट देयर स्टार्ट क्लाइंबिंग, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, फाइनली उसका रिजल्ट क्या हुआ. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. वन स्टोरी. जैसे मैंने पहले ही बोला, आप ऐसे मत लिखो बच्चे. जैसे माई सेंट्रल कैरेक्टर इज मोहन एंड ही वाज इंटरेस्टेड, वो समझ गए. आपने आप सीधा लिखो मोहन यू नो कीन माउंटेनिंग और समथिंग, जो भी आप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस और एक्सप्लोरर समथिंग, ज्यादा बेटर होता है. समझा? क्या मोहन ही होगा सेंट्रल कैरेक्टर. ये बोलती बार आप बोलते हो कई बार ऐसे, जब आप नरेट करते हो ना कि सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी इज मोहन, एंड देन यू गो हैड विद दिस स्टोरी. लिखती बार नहीं लिखते हैं. ठीक है. शुभम डे लवर. ओके, शुभम ने लिखा है देयर आर थ्री मेल्स एंड वन इज फीमेल. Practical resources along his friend decided to explore and research about the mountain and glacier. Recently, they heard news about glacier melting in Ladakh region. So during their vacation, they all went in Ladakh, and Mohan, along with his friend, to climb the mountain to see the reality of what they heard in the news, and they also gathered some more information. It's थोड़ा सा half-hearted है. It's very impractical. Of which glacier you're talking about in Ladakh? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा. But thereafter, during this friend to climb the mountain to see the reality of what they heard in the news, and they also gathered some more information from there. After they came back to their home and started campaigning the society to make aware of the people that what they have seen there, and requested the people to. बहुत ही generic थे, हवा हवाई वाली ये story है. Again, I will not go ahead with it. Would have been much better. Story 1. हाँ, वही 2 लिखा है. I'll read both. All our school friends went to Uttarakhand for hiking. They're enjoying the hike. I hope now you understand इसमें क्या change करना है. All of, right? Say for example, if Mohit is the hero, Mohit along with his friend. आपको नाम भी लिखना है तो भी लिख सकते हो. Along with his friend, Satyam, Ankit and Vivek. They went to Uttarakhand for hiking. They're enjoying the hike and looking at the beautiful nature. Decide to spend the night there only to see tomorrow early sunrise. After this,
Discussion all were stopped to take a break, but Mohit refund for it went back for what to look for the place where they can put the tent for night. After looking for a while, Mohit got the place and his friend were on the way after their break. Spent their night and woke up early for sunrise and witnessed the memorable sunrise. वेरी लो लेवल स्टोरी स्टोरी में मतलब ठीक है रिलेवेंस है बट थोड़ा लो लेवल। मतलब आप सिर्फ एक कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट व्हाई इट इज लो लेवल। समटाइम यू आस्किंग कि क्यों लो लेवल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत नॉर्मल आप एंजॉय कर सकते हो, यू कैन आल्सो मेक ए स्टोरी लाइक यू गोइंग इन ट्रिप एंड यू एंजॉय दैट ट्रिप, बट what increase the level of your story is what did you plan, how did you execute those planning there and what actually you did। वो सारी चीजें अगर आप आ जाएंगे अगेन लेवल गोज अप। तो लेवल इसलिए नहीं जाएगा कि आप बहुत हाई फाई कुछ लेके आओगे कि एक्सप्लोरर है ग्लेशियर मेल्ट हो रहे, नो, दे कैन गो एंजॉय हैव फन बट उसके लिए प्लानिंग चाहिए। फाइनली हीरो का मतलब क्या है कि अगर ट्रिप पे भी जा रहा हूँ, कहीं पिकनिक पे भी जा रहा हूँ, कहीं घूमने भी जा रहा हूँ, व्हाट माय प्लान इज प्लेस, व्हाट डिड आई डू फॉर इट, और उसके लिए वहां जाके मैंने क्या किया, देन आई आउटकम क्या है। तो ये सारी चीजें कुड हैव टेकन बेटर स्टोरी। Dave, yes, Ashwin, 25, 27, a professional mountaineer and over climbing. And while that Ashwin saw a person and told his friends to go that side, all of them went towards him and picked him up and put him in his sitting position. मतलब देखा तो उसको ज्यादा उठा लिया and gave him warm water to drink. उसको चाहिए भी नहीं चाहिए था, आपने कहीं लिखा कि उसको प्रॉब्लम है। And when we were talking out, maybe they were talking out his shoes to rub his feet so his body get heated, but we cannot take out his right shoes because his right ankle got twist. While this, he told us that before three of us, some people go upwards but failed to spot him, and he told that he was not having energy to shout. Ashwin told Dev and just to continue to rub his feet and gave him some warm water. And Ashwin, I mean, not he was describing some scene and scenarios, थोड़ा सा फिल्मी बना के नहीं बच्चा, यू रिक्वायर थोड़ा सा मोर वर्क एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर दिस। अरे वाह, तो ये दिल खुश होगा ये लड़के का देख के। सत्यम ने लिखी है 3 स्टोरी, ठीक है, ये मैं पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, Team rescuing story. 3 friends went for mountaineering and hired an instructor named Ayush. Ayush told them the basics of mountaineering and provided the required accessories. अब हीरो कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। While mountaineering, one of the 3 friends watched lost. Ayush noticed the place. तो आप अगर देखो आयुष के पर्सपेक्टिव से लिखते कि जो इंस्ट्रक्टर है वही है, तो आप इंट्रोडक्शन में उसी को लेके आओ, लाइक आयुष अ माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर रनिंग सम कैंप, और जो भी है उस बच्चों को बुला के क्या किया, तब उसको लो सकते हो आप। Had explored that area, went to the place where it's seen last, and noticed for the footstep, found the third friend. The third friend was very afraid. So one of their friend watch lost. अभी उसकी घड़ी खो गई है कि दोस्त खो गया? The third friend was very afraid as he lost his way. अभी दोस्त खो गया। अच्छा, लैंग्वेज पे काम करना है सत्यम आपको, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आई एम श्योर इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ राइटिंग कम्युनिकेशन, क्योंकि आप लिख सही सेंटेंस नहीं रहे हो, ये सही से निकल के बाहर नहीं आ रही है, तो मे बी स्लाइटली गो रॉन्ग। उमेश, a college student fond of mountaineering, he decided to go for mountaineering in this summer vacation. He asked and convinced his friend for this trip, and then he and his friend took permission from their parents, and then he searched out the area where they want to go for mountaineering. ये फिर भी उस थोड़ा मिस्टेक है और उससे मच बेटर है, यहाँ पे लैंग्वेज फिर भी सही आ रहा है। He found the best route and booked tickets for destination, purchased all necessary items which were required, search out the weather condition of that area. While mountaineering, they shoot some videos and click some photos for the memories, and after clicking back this that their experience with their friends, they share, है ना, and with the friend and family, thank you। देखो ये उससे बेटर है, इसमें कई चीज बहुत अच्छी है आपकी स्टोरी में, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। आई एम श्योर वंस यू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स आप उसको इंप्रूव करोगे। जैसे प्लानिंग में देखो क्या क्या चीज आती है, उसमें अच्छी चीज क्या है, अच्छा क्या है इसमें, खराब क्या, अच्छी क्या है कि उन्होंने वेदर कंडीशन जाने से पहले चेक किया, ठीक है, देर आफ्टर उसने प्लान किया, परमिशन लिया, ये सब। और अच्छा इसमें क्या हो सकता था कि राइटिंग द नेसेसरी आइटम, आप बोलो कि ये आइटम का रिक्वायरमेंट है, ये आपने लिया, और भी मतलब हो सकता था थोड़ा सा एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू ब्रिंग इट आउट। और वहां पे आपने जाके सिर्फ कुछ वीडियो शूट किए, मतलब आप वो एकदम यूट्यूब टाइप बच्चे बनना चाहते हो, यूट्यूब इंस्टा टाइप बच्चे, तो वो थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, बट स्टोरी इज क्विट बेटर। इन्हीं एक्शन से आप बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते थे, लेकिन मेन ऐसा लग रहा है कि ऑल द वे दे वेंट देयर टू क्लिक सम फोटोग्राफ्स।
It is a part of it. Once they came, they shared their memories along with the videos to the friends. वो एक लाइन में आ सकता था. अभी ऐसा लगता है मेन थीम वही था जाने का कि होता यही है. मतलब आधे से ज्यादा टाइम you just go because you want to take some videos. But videos एक part है. Actually में तो you go and relive their experience. I mean you live their experience, feel those experience and then come and share those things. अब है माउंटेनिंग स्टेटस. श्याम लिव्स इन अल्मोड़ा विलेज उत्तराखंड. ही इज विलेज माउंटेनिंग part of Ishan Institute of Mountaineering, village mountaineer part of. And once a foreigner group came for mountaineering and he took the task of instructing mountaineering the foreigners. So he first taught them the basic of mountaineering and he along with the foreign group went for mountaineering. इतनी बार ऐसे लग रहा है बार बार रिपीट करना. He kept them motivating as interested. He was very friendly with the group. He was enthusiastic with them. When they were getting tired after some time they reached top of the hill and took some photos and video. ये भी ठीक लिखा है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका लैंग्वेज पे काम करना है बच्चा. इफ यू वर्क ऑन योर लैंग्वेज आई एम श्योर यू विल राइट वेरी गुड स्टोरी. लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट. वेरी बेस्ट पार्ट अबाउट इट, यू गॉट 3 स्टोरी. 2 का थीम सेम लग रहा है, पहले वाली का और तीसरे वाली का, लेकिन स्टिल गुड एफर्ट. लेट मी टेक नाउ वन मोर एंड आई एम आल्सो लुकिंग. स्टोरी 1 लिख के बस 1 ही है, ये तो गड़बड़ है. तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा, मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ. गॉट इंस्पायर्ड डिसाइड टू अपलिफ्ट हिज फैमिली सिचुएशन. Rahul is son of a Sherpa. Seeing his father going to mountain to assist other tourists and doing hard work to support his family, he got inspired decided to uplift his family situation. मतलब why to create की family में problem है. Since he lived in a mountain, he know all about it, so he decided to choose mountaineering as a career. He completed his basic advanced mountaineering course. हाँ, ये देखो, ये कुछ अच्छा है इस स्टोरी में. अच्छा क्या है कि when we talking about कि he decided to choose mountaineering as a career, you have written he has done the basic course, advanced course. I mean ये थोड़ा elaborate कर सकता था, लेकिन ये बहुत अच्छे से लिखा था. But he thought about it कि एक माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए बनने के लिए. आपको बेसिक कोर्स क्लियर करना है, एडवांस कोर्स क्लियर करना है, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स होता है, एंड MOI फ्रॉम JIM पहलगाम. आफ्टर he joined Clo Global as इंस्ट्रक्टर and also pursued many club tracks, many summit with them. इसका एक थीम थोड़ा बेटर हो सकता था कि आपका बंदे का क्या एम है. एम हमेशा ये नहीं होता आई वॉन्ट टू बिकम ए माउंटेनियरिंग. उसमें आपका पैशन भी होना चाहिए, उसमें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि पैसे कमाने के लिए. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. बट अगेन एक्शन आई मस्ट से ही इज थॉट अबाउट इट. इट्स अ गुड स्टोरी, कुड हैव बीन मच बेटर इफ रिटन इन अ वेरी वेल मैनर्ड. और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखो, एक्शन बहुत है यहाँ पे, बहुत सी स्टोरी है. मे बी अगर आप वैसे भी अच्छा से इसको नरेट करोगे तो वेद आई विल क्लियर यू. लास्ट में नाउ वन बोनस. लेट मी सी व्हाट स्टोरी कम्स. ये गड़बड़ होती है जब भी मैं बोनस की बात करता हूँ, ये पूरा का पूरा ऐसे चला जाता. I think there's no bonus, but I said remember now, the few things which you have to keep in your mind is when you're preparing for this PPDT and writing those story from tomorrow. I mean, जब आप लिखोगे स्टोरी आज का, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है. Most important part of the story is what led to the situation, but it should take not more than 1 or 2 lines. What is happening now? जो आपके actions हैं, they're very very important. उस पे थोड़ा सा आपको काम करना है. Thereafter, what is happening now के बाद क्या है आपका व्हाट इज द आउटकम, वो अगेन छोटा थोड़ा हो सकता है. और उसमें फाइनली आउटकम ये नहीं होता कि लोगों ने प्रेज किया, हैप्पी. जो आपका एम था वो कंप्लीट हुआ. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. एंड मोर ओवर, आई मीन लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू राइट 2 स्टोरी और 3 स्टोरी और 4 स्टोरी. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असेस दोस स्टोरीज. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, एंड देयरआफ्टर सी यू नेक्स्ट क्लास. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.